by saying how pleased I am to be able to share Breakthrough's work with you today. I'm truly honored to have this space. It's also particularly relevant for me to be able to share this story with you because the UN Trust Fund to End Violence Against Women has been a very key supporter, along with UNIFEM, of our work in India. So my mantra in life, if you will, is that human rights begin at home. That if we do not deal with creating the values of dignity, equality, and justice as cornerstones within our homes, within our families, within ourselves as individuals, that all the conversations that we have about human rights externally, whether it's in conflict zones, whether it's in economic policies, whether it's in any other social policies, that until we understand that human rights must begin at home, that other policies can never be implemented in the ways in which we hope and dream about. Because I believe so deeply that human rights begin at home, I have devoted a large part of my work over the last 30 years to addressing violence against women in the home. And that journey has taken many different forms, from starting an organization called Sakhi that works with South Asian women in New York City who are victims of domestic violence, to being a part of the Center for Women's Global Leadership and the journey to articulating women's rights as human rights through the world conferences that happened in Vienna, Cairo, and Beijing in '95, as a human rights program officer at the Ford Foundation, where I was in India and really supporting women's rights work at the community level. But for the last 10 years, I've been embarked on an experiment, if you will, to really figure out how we transform norms and cultural values and relationships between men and women to truly begin human rights at home. And in that journey, I have made the decision to use media, arts, and culture as the mechanism to do that for a couple of reasons. One is media, arts, and culture allow us to frame larger public debates. We're not just trying to influence the lives of individual women at the normative level. We're trying to transform an entire cultural, political, social, and economic context. And media plays an incredibly important role in doing that. Culture is sort of the world that we swim in. And we often talk about culture and women as oppositional terms. But all of us sitting in this space are parts of culture, and culture can have values that support human rights and values that denigrate human rights. And the way in which Breakthrough uses culture and talks about culture is to transform human rights values into cultural practice. And again, media, arts, and culture with a small c really enable us to do that. The third thing that I just want to say before I start actually sharing some of the work with you visually is that as far as I'm concerned, it's about bloody time that men and boys became a part of the solution to ending violence against women. We have been, for many years, we focused on the empowerment of women. We focused on providing redress to victims of violence, to looking at what was happening to people post-violation, service provision, criminal justice systems. Particularly in this country, we focused a lot on criminal justice interventions to address violence against women. But really, over the last 10 years, we at Breakthrough have worked with men in many different ways to really make them take accountability for and become a part of becoming the solution to dealing with domestic violence. So what I'm going to do today is show you our most current campaign in India, which is called Bell Bajao, which means ring the bell. I wanted to do a little bit of a historical leading up to this point and showing you things from previous campaigns, but since that pen drive isn't happening, I'm going to really just share Bell Bajao with you in some detail. And I also understand that I'm all that stands between you and lunch, and we've been running over a lot. So I'm also going to try and be as brief and tight and interesting as possible so that the growling stomachs don't overtake the interest in what it is that we have to share with you today. So 2 years ago, we launched Bell Bajao.
Ogilvy and Mather is a pro bono partner of Breakthrough in India, and they actually create all of our campaigns. We produce them, we have to raise the resources to produce them, but all of the creative happens with Ogilvy. And I want to show you the 3 newest ads that are on air in India right now, and then move into some of the other pieces. So can we start with the first ad, the bank clerk? ये क्या है? दिखाई देना तुम्हें क्या है? कपड़े ठीक से नहीं धो सकती तुम? शर्ट पे दाग है, दाग क्यों नहीं गया? रो मत मारो, मैं दोबारा धो दूंगी। तेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है? हैं? दिन भर बैठ के मैं तुम्हारी करती। हाँ अंकल। वो तुम्हारा पोस्ट कार्ड शायद कोई गलती से मेरे घर डाल गया था। Bring domestic violence to a halt. Ring the bell. मेरी मर्जी वो मैं करूंगा। तू दिन भर घर में रहती और टोकती रहती है। तेरी औकात में रहकर तू औकात में रहकर तेरी मेरा मेरे घर की बिजली चली गई है, आपके यहाँ है क्या? हाँ है। Bring domestic violence to a halt. Ring the bell. So these ads just played at the Cannes Film Festival last week, which was really a major coup for us. Apart from winning innumerable awards, what's been remarkable about this campaign is that we've reached 130 million people through television, radio, print, and different dissemination mechanisms. The Ministry of Women and Child Development came on board as a dissemination partner. But more importantly are all of the stories that we're getting from people around the country who are intervening in domestic violence situations. It's not always literally ringing the bell. It's taking all kinds of different forms. In some places, young people are going and watching television in their neighbor's home at the time that the husband comes home every day, because that's the time that he usually beats his wife. And it's just been an extraordinary shift for us from the previous campaigns, which have also focused on the role of men, to see where when we demand that men become part of the solution, how they respond. Let's see if we can play this one that keeps wanting to be played, the one in the yellow. Let's break through together. पढ़ रही हूँ। मेरे परिवार में 7 लोग हैं, मम्मी पापा, 4 बहनें, 3 भाई। मैं ठाकुरगढ़ में रहती हूँ। ब्रेक थ्रू की पहचान मुझे मेरी फ्रेंड से हुई। एक्चुअली मैं तो टीवी वगैरह में ऐड देखती आई थी, मगर मेरी फ्रेंड ने बताया कि ब्रेक थ्रू की ट्रेनिंग है, तो मैं वहाँ ज्वाइन हुई जाके। मुझे बहुत नई नई चीज़ें मालूम पड़ी जो कभी नहीं सुनी थी मैंने।
जैसे घरेलू हिंसा के बारे में और एड्स के बारे में, जिनके बारे में कभी सुनने का सपना भी नहीं था, मतलब कि जानने का वो भी नहीं था, कि घर पे रहती थी तो उसके कोई मैटर नहीं पता था इसके बारे में। जागरूकता फैलाने के लिए हमने रैलियाँ निकाली, रैली को भी ज्वाइन किया। जैसे मैंने यहाँ चौक में भी निकाली और बहुत लोगों को HIV एड्स और घरेलू हिंसा के बारे में भी जागरूक किया। कैलाश, ओ कैलाश, हमको कुछ नहीं मांगता, हमको हमारा घर खाली मांगता। रमाकांत, तुम बीच का आदमी है, तुम ही बात करो अपने फ्रेंड से। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लागू हुआ है। ये महिलाओं के अधिकारों के लिए बना है। अगर कोई महिला पर किसी व्यक्ति द्वारा मार पिटाई या अत्याचार किया जाता है तो वो महिला उसके खिलाफ भी। ये पपेट शो की ट्रेनिंग हमें अरशद सर ने दी थी और ये 10 दिन की थी। उस टाइम मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे मगर मैंने फिर भी मैनेज किया और पूरी ट्रेनिंग की। मेरी बहन की उस टाइम पे बहुत हालत ख़राब थी तो वो एडमिट थी। तो मैं जब प्रैक्टिस करने जाती थी उससे पहले खाना बना के जाती थी, वहाँ से आकर के भी खाना बना के हॉस्पिटल भेजती थी। उसके अलावा मेरे भाई ने थोड़ा सा कहा कि वहाँ क्यों जाती हैं, क्या करती हैं, तो मेरी मम्मी ने उनको समझाया। जो बात हम लोगों के सामने खुलेआम नहीं कह सकते थे, डरते हैं, वो हमने पपेट शो के द्वारा किया। भले ही उसके पीछे छिपके किया, लेकिन फिर भी हमने लोगों को जागरूक किया कि एक औरत के अधिकार क्या होते हैं, उनका सम्मान करना कितना ज़रूरी है, या वो भी एक मर्द की तरह साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। उनको पूरा बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लोगों की जो यानी अच्छे विचार कमेंट्स मिले वो बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा और ये सोच लिया कि अब हमें ब्रेक थ्रू का साथ नहीं छोड़ना है। अगर कभी इसमें और भी हम लोगों को कुछ काम या कुछ वर्क करने को मिलेगा तो हम ज़रूर शामिल होंगे। जैसा कभी कभी होता है कि आपको अपने ग्रुप से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है और कभी कभी होता है एकदम आपको लगता है ये कुछ नहीं कर पाएंगे, दो अलग तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ग्रुप में ट्रेनिंग दी तो कुछ बच्चे वाकई में बहुत एनर्जेटिक थे, जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने एनर्जेटिक होंगे और इतनी जल्दी वो लर्न करेंगे, इतनी जल्दी सीखेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी लोगों ने सीखा और उसको बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों के सामने पेश किया। ब्रेक थ्रू से पपेट शो के ज़रिए से जो मुझे अनुभव मिला है, मैं चाहती हूँ कि उसके ज़रिए से मैं इस समाज के हो रहे जो अन्याय हैं उसको बदला जा सकता है। मेरी निजी ज़िंदगी में बस इतना बदलाव आया है कि पहले मैं अपनी बात को दबा देती थी, कभी कुछ नहीं कह पाती थी कि अगर मुझे ये करना है, ये सोचते थे कि मेरे फादर नहीं, अगर मैं कुछ ऐसा कदम उठाऊंगी तो हो सकता है मेरे घर वालों पे बुरा असर हो या उनको कभी कुछ कहे ना। फिर मैंने खुद मम्मी को और भैया को बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं ये सीखती हूँ। तो भैया का थोड़ा बहुत मूड बिगड़ा है, फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं अच्छा है, कुछ तुम अलग कर रही हो, बहुत बेहतर है। ब्रेक थ्रू हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव लेके आया। जैसे हमें एक आत्मनिर्भर होकर जीना सिखाया है कि आप अगर आपके अंदर कुछ चल रहा है या आप कुछ देख रहे हो, गलत देख रहे हो, या अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो, आप बेझिझक सब कुछ कर सकते हो। I need a time check. So 10 minutes, I just need to know. Okay. So I wanted to share with you another pillar of Breakthrough's theory of change. At the end of the day, what we're trying to do in terms of bringing human rights home is transform the hearts and minds of individuals and other actors to become what we call rights advocates. And we want you to be a rights advocate in whatever location that you might find yourself